हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट टू माय इनिशिएटिव टू हेल्प रीच आउट टू स्टूडेंट्स हु really need support for the general studies and particularly for science and technology and environment subject. So I have already started a series on Nobel Prize 2025. तो ये जो सीरीज है इस कॉन्टेक्स्ट में आज टुडे देयर इज अनाउंसमेंट ऑफ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025। जैसे मैं अभी पिछले दो सेशंस में केमिस्ट्री के पहले जो है फिजिक्स और उसके पहले मेडिसिन और फिजियोलॉजी का अनाउंसमेंट के बारे में मैंने कवर किया है। जो लोग अभी ये देख रहे हैं तो आप इस सीरीज के पहले वीडियोस में जाएं तो आपको वहां दिख जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम लेट्स कम टू दिस वन अगेन। Three Nobel Prize winners, again three Nobel laureates, right? And again one third, one third, one third. Same as Nobel Prize in medicine, one third, one third, one third. Nobel Prize in physics, one third, one third, one third. So this year's Nobel Prize in chemistry has been awarded by Nobel Committee to Susumu Kitagawa. He is from Kyoto, Japan, University of Kyoto, Japan. Then come Richard Robson. He is from University of Melbourne, Australia. And then Omar M. Yagi. He is from the US, right? So these three scientists, Kitagawa, Robson, and Yagi, they've been awarded Nobel Prize in Chemistry for their very important research of MOF, metal organic framework, right? Metal organic frameworks, what they have developed, right, based on that. So if you look at here, what is the announcement says? The Nobel Prize in Chemistry 2025 was awarded jointly to Susumu Kitagawa, Richard Robson, and Omar M. Yagi for the development of metal organic frameworks, MOF. I'll explain what other things are there. Metal organic framework. Now, as I've been discussing every session, that you have a summary of the award, right? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है, जो इन्होंने लैब में बनाया, पर्टिकुलरली जो कितागावा जो है, जो जापानीज साइंटिस्ट है, उनके जो वर्क है, और ये फिर अब 80s के टाइम में जाते हैं। जैसे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के लिए मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग 1984-85 में किया गया था। अगेन द एरा इज द सेम, 40 years back, way back to 1985, where these three scientists did the research work in the chemistry to develop this metal organic framework. Metal organic framework में मतलब organic molecules like carbon based organic molecules, organic chemistry with the metal, let's say any metallic ion, and the bonding and the developing a structure which may have cavity. आप यूं कहें कि crystal, there's development of crystals in the lab which will have a metallic ion along with organic molecule, and that which can storage, absorption in that particular lattice or cavity. So that is what called MOF, metal organic frameworks. और आप सबको पता है कि कोई भी नोबेल प्राइज का जो है, एक होता है फंडामेंटल रिसर्च और एक होता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, और कई बार जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि फ्यूचर एप्लीकेशन व्हाट इज देयर मे बी आफ्टर डाउन द लाइन 20 years, it will be very, very important. In environment ecology, I teach a topic called carbon capture. Global warming, climate change, which is a serious problem, and one of the big concern is carbon dioxide gas, greenhouse gas going to the atmosphere. Can there be such kind of materials, right? Can there be such kind of materials which can absorb CO2 gas, carbon dioxide gas? So this year's Nobel Prize winners, their work, that metal organic framework, are those kind of new materials which can even absorb or capture carbon dioxide gas, है ना? जो CO2 गैस है उसको भी कैप्चर कर सके में सहायक हो सकता है ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इन्होंने ऐसे मटेरियल को डेवलप किया। तो वहां पर अब मैं अगर
यहाँ समरी में जाऊं तो नोबेल प्राइज के समरी में क्या दिया हुआ है, अगर हम लोग उसको देखें, ये समरी का जो है, मैं अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मैं आई जस्ट गो टू द प्राइज अनाउंसमेंट पार्ट ऑफ इट. ठीक है, नाउ you have all the documents here, right? This part comes into that. प्रेस रिलीज, यही चीज अभी सोशल मीडिया में है, यही चीज कल के अखबारों में होगा. तो यहां पर ये जो है द पीडीएफ, ना, आई बीन डिस्कसिंग ऑल द पीडीएफ, वन पेज पीडीएफ which talks about this. So now you can see here, I'll just zoom out here. ठीक है, for the development of metal organic frameworks. Now their molecular architecture contains rooms for chemistry. That is a crystal lattice cavity which can absorb or store right inside that structure what is called MOF, metal organic frameworks. So Nobel Prize laureates in chemistry, they have created molecular constructions with large spaces, remember that, molecular level but at the large space for storage, large spaces through which gases, even gases can be stored, gases and other chemicals can flow. Now these are called metal organic frameworks, can be used to harvest water from the desert air. Imagine this type of structure can be able to harvest water molecules from desert air. आप कल्पना कीजिए रेगिस्तान क्षेत्र, डेजर्ट, जहां पानी की कमी होती है, लेकिन हवा में क्या होता है, वेपर होता है, वाटर वेपर हो सकता. तो ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है ना, उसको हम ऐसा डेवलप कर सकते हैं, ये जो डेजर्ट के एरिया में, रेगिस्तानी क्षेत्र में जो हवा में जो पानी है, नमी है, उसको लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकता है. वो बहुत बड़ी बात है. अगर हम इसकी बात करें, बहुत बड़ी बात है कि पीपल हु लिव इन डेजर्ट एरिया कैन यूज दैट. अब इमेजिन करिए आप फ्यूचर में सऊदी अरेबिया, राइट, अबू धाबी और दोस्त काइंड ऑफ डेजर्ट एरिया इन इंडिया, थार, जहां पर ऐसे चीजों को हम मटेरियल के द्वारा हम हवा से पानी बना पाए, है ना, हवा से पानी और ड्रिंकिंग वाटर बन जाए. तो दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू दिस काइंड ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क. एंड देन सी कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग का जो समस्या है, CO2 गैस को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं. स्टोर टॉक्सिक गैसेस, जैसे कई बार इंडस्ट्रीज में केमिकल टॉक्सिक गैसेस होते हैं, राइट, कई बार ऐसी चीजें, स्टोर टॉक्सिक गैसेस. और कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन, जो नॉर्मल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है या लैब लेवल पे केमिस्ट्री होते हैं, जहां कैटेलिसिस चाहिए, no, with the role of the catalyst and all this one. So that can be, right, that can be stored, right, or reactions can be run faster, right, that can be run faster using this kind of metal organic framework. ठीक है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर यागी, है ना, उसके बारे में फॉर्म मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर. और ये कार्बन बेस्ड है, मतलब इन्होंने क्या किया, मेटल आयंस फंक्शन एज कॉर्नरस्टोन्स दैट आर लिंक्ड बाय लॉन्ग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. जो लॉन्ग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसके साथ मेटल आयन, है ना, दैट कैन बी फैब्रिकेटेड विच विल हैव मोर स्पेस फॉर स्टोरेज. ठीक है, तो यहां पर ये चीज है, लार्ज कैविटीज. These porous materials are called metal organic framework. By varying the building block they used in MOF, chemists can design them to capture store substance. इस पे अलग अलग तरह के डिजाइन करके अलग अलग तरह के MOF को बनाया गया है. इनके रिसर्च के बाद ऐसे कई मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को बनाया गया, और जिसका बहुत वाइड एप्लीकेशन एनर्जी सेक्टर में हो सकता है. जैसे कि मान लीजिए सोलर एनर्जी, सोलर पावर, बैटरी, है ना, स्टोरेज डिवाइस, वहां पर इसका हम काम कर सकते हैं. एनर्जी हार्वेस्ट एंड स्टोरेज में एप्लीकेशन आ सकता है ना, यहाँ पर जो ड्राइव केमिकल रिएक्शंस और कंडक्टिविटी. तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इनॉर्मस पोटेंशियल बीइंग प्रीवियसली अनफोर्सिन, है ना, इससे पहले लोगों ने नहीं सोचा था. लेकिन अब है. कब की बात है, इट ऑल स्टार्टेड इन 1989. वी आर नाउ इन 2025. वे बैक इन 1989 दिस वर्क स्टार्टेड व्हेन रिचर्ड रॉबसन, है ना, ही डिड सम काइंड ऑफ वर्क विद द एटम्स इन अ न्यू वे. ही कंबाइंड पॉजिटिव चार्ज कॉपर आयन, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज कॉपर आयन, कैटायन जो कॉपर आयन को 4 आर्म मॉलिक्यूल के साथ किया, एंड ही डेवलप्ड दोस काइंड ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क. फिर बाद में चलकर दे कंबाइंड बॉन्डेड टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ मेटालिक स्ट्रक्चर. जैसे डायमंड होता है, जस्ट लाइक डायमंड, डायमंड हैज अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड. तो डॉक्टर रॉबसन was able to develop a similar type of molecule
by using copper ion and the organic molecules, carbon based organic molecules. ये बताया गया. Robson immediately recognized the potential कि इन्होंने क्या चीज किया molecular construction में, है ना. फिर then comes the other two scientists, Dr. Kitagawa and Dr. Yagi. They also provided method to with a firm foundation. 1992 and 2003 में they made separate, Kitagawa separately, Yagi separately, series of revolutionary discoveries. बहुत नए नए discoveries हुए. Kitagawa showed that gases can flow in and out of the construction, predicted that MOFs could be made flexible. Japanese scientist from Kyoto University, he proved that gases can pass through metal organic framework in and out. Whereas Dr. Yagi, right, Omar Yagi, he modified using rational design, giving it a new and desirable property. नए नए properties को इन्होंने develop किया. तो following the laureates groundbreaking discoveries के बाद chemists have built thousands of, मतलब उसकी इन तीनों वैज्ञानिक के काम के बाद, after this groundbreaking research, many chemists, scientists worldwide have developed thousands of such kind of metal organic frameworks. That structure have built tens of thousands of different MOFs. Some of these may contribute to solving some of mankind's greatest challenges. जहाँ पर उसका applications है, broad application that includes separation of PFAS from water, and even contaminants, right? The perfluoro, this kind of PFAS, ये एक तरह का हानिकारक सब्सटेंस है. इवन यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया है ना, दिस परफ्लोरो अल्काइल काइंड ऑफ थिंग दे, जो कि हेल्थ को इम्पैक्ट होता है. समटाइम्स सीवेज वाटर और जो नॉर्मल वाटर विच इज कंटामिनेट विद पोल्यूटेंट, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है, मटेरियल्स है, फिल्टर का काम कर सकता है. क्या कर सकता है? फिल्टर का काम. कैन रिमूव सच काइंड ऑफ हार्मफुल PFAS फ्रॉम वाटर, ब्रेकिंग डाउन ट्रेसेस फार्मास्यूटिकल इन्वायरमेंट. कई बार जो इन्वायरमेंट में जो मेडिसिन, ड्रग्स या कोई भी ऐसी केमिकल्स सॉइल में, वाटर में, उसको ब्रेक डाउन कर सकता है ना. व्हाट इज समथिंग कॉल्ड केमिकल रिमीडिएशन, कि सच काइंड ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, राइट, और लेट्स से इवन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स विच आर देयर, है ना. कई बार हम दवाइयों को फेंक देते हैं, है ना, सॉइल में, वाटर में, उसको ब्रेक डाउन कर सकता है. दैट व्हाट कैन बी डन. एंड देन कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बन कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन, CCUS. इस साल के मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी मेंस में. तो एंड हार्वेस्टिंग वाटर फ्रॉम डेजर्ट एयर, वहाँ से जो है डेजर्ट. एंड यागी जो है, ही इज फ्रॉम जोर्डान. इफ यू लुक एट, कितागावा इज फ्रॉम क्योटो, जापान, प्रोफेसर इन क्योटो यूनिवर्सिटी. रिचर्ड रॉबसन इज फ्रॉम born in Glasgow, UK, but he is right now University of Melbourne, Australia. Omar M. Yagi, he is born in Amman, Jordan, right? But he is he did his PhD from Illinois, right, University in USA, and right now he is a professor at University of California, Dr. Omar Yagi. So this way it becomes very important. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या उसका डेवलपमेंट है, क्या क्या एप्लीकेशन है. और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जहां पर जीके क्वेश्चन आते हैं, तो देयर यू नीड टू नो द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट. वहां आपको नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट पता होना चाहिए कि हु आर दोज साइंटिस्ट हु हैव बीन गिवन द अवार्ड, है ना. उसके नाम पता होना बहुत जरूरी होता है. जहां पर आप यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द नेम्स ऑफ दोज साइंटिस्ट देयर, है ना. वो पता होना चाहिए कौन कौन साइंटिस्ट है. तो जीके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. बट इन यूपीएससी एग्जाम, एरिया ऑफ वर्क, व्हाट साइंटिफिक वर्क हैज बीन डन, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So today is the third session, right, of the Nobel Prize of 2025. I have already covered in previous two sessions on medicine, physiology and physics. Now today chemistry. Now tomorrow and the next day, that will coming future sessions, I will cover the other Nobel Prizes there. I hope you all are able to understand it, and मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ. I thank all of you for getting connected with me in my YouTube channel and remaining, following the content which we are trying to do it. We are trying to provide you history, IR, and many other topics, right, which can help you in the examination. But in general, whoever watching right now, the general public, for them also it becomes very important. ये सभी लोगों के लिए जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप इसको आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें, right? What I always say, sharing is caring. So I will be back again. Thank you so much. Take care. Bye-bye. Thank you.